And a very good morning to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. So guys, in this class, we will be discussing a very important topic which is very much in the news, and that is COP28, which is actually happening in UAE, that is United Arab Emirates. Okay, so basically, if I am audible, just write in the comments. Yes, sir, you're audible. Okay, am I audible? Okay, yes, I have checked it. I hope you are aware this has been coming in the news. I will discuss it in both English as well as Hindi. मैं अंग्रेजी में भी बोलूंगा और हिंदी में भी बोल दूंगा ताकि दोनों लोग समझ पाओ, ठीक है? So those who can understand in English, they can understand in English. Otherwise, जिनको हिंदी आती है वो हिंदी समझ लेंगे. Okay, so let's start. You must have seen this if you are reading newspaper, either the Hindu or Indian Express or any other newspaper. You must have come across this article. What can we expect from health talks? COP28 has been very much in the news. Now the question is, sir, what is the full form of COP and why we are calling it as the 28th meeting? So we have to go, we have to learn in the past also that when did the first COP happen? The idea of COP came from where? What is the full form of COP? So these are the things we will be discussing. ठीक है? तो अभी जो बात हो रही है वो COP 28 यूएई की बात हो रही है, अभी जो कि 12 दिसंबर तक आज तक चलेगा. 28 नवंबर फ्रॉम 28 नवंबर टिल 12 दिसंबर दिस मीटिंग इज हैपनिंग. ओके, अब ये चल रहा है तो अब सवाल बनता है कि COP क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये 28वां मीटिंग क्यों है, इससे पहले और जो मीटिंग्स हुए कहाँ हुए, पहले मीटिंग कब हुए, स्टार्ट कैसे हुआ इस आइडिया को, COP या के आइडियाज को स्टार्ट कैसे हुआ, ये सब हम लोग जानेंगे. Okay, first of all, I hope you are aware that the current COP is actually happening in United Arab Emirates. There's a place called as Dubai. दुबई एक शहर है UAE में, वहां हो रहा है 30 नवंबर से 12 दिसंबर. That is today will be the last day. Okay, yes, of this. Now the question is, सबसे पहले सवाल ये बनता है कि इसके पास्ट में जाते हैं कि इसका जेनेसिस कहां से. And so first we have to understand that from where the idea of this COP started and what is the full form of COP and all. ठीक है, अगर किसी को पता है तो बता दे, बहुत अच्छा. I'll be very happy. You can write it in the comment section. So सबसे पहले when we are going to the genesis of COP or conference of parties, the beginning or the history of COP, first we have to know about the Earth Summit. तो पहला क्वेश्चन है, because I have told you I'll be asking questions also. मैं आपको सवाल भी देता रहूंगा ताकि आप उसका आंसर करो और उससे भी लर्न करते करते हम लोग जानेंगे. So the very famous environment summit called as Earth Summit happened in the year 1987, 1992, 1995, 1997. Please answer it in the live chat. एक environment summit हुआ था. summit मतलब मीटिंग समझ लो एक तरह का, ठीक है. इसका नाम Earth Summit कहते हैं. वो कौन से साल में हुआ था आपको बताना है. और ये एक्चुअली जब भी हम COP की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये Earth Summit becomes very important. So what is the year? Yes, very good. अरवा पूनावाला, 1992. Now the question is, Earth Summit of 1992 happened in which country? Johannesburg, South Africa, Rio de Janeiro, Brazil, New York, USA, Paris, France. What is the right answer? इसको हम लोग UNCED भी लिखते हैं, UN Conference on Environment and Development. UNCED, UN Conference on Environment and Development. Okay. Happened in which country? Johannesburg, South Africa, Rio de Janeiro, Brazil, New York, USA, Paris, France. Yes, अरवा पूनावाला, very good. The right answer is Rio de Janeiro, Brazil. इसीलिए इसको हम लोग Rio Summit भी कहते हैं. That is why we call it as Rio Summit of 1992. ठीक है, तो हुआ ये था कि 1992 में एक समिट हुई थी, एक एनवायरमेंट की मीटिंग हुई थी रियो डी जेनेरो, ब्राजील में. ओके, सो इन 1992 एन अर्थ समिट officially called as UN Conference on Environment and Development Summit happened in Rio de Janeiro in Brazil. तो कहां पर है? Let's see. So this is India. This is a continent called as South America. Okay, ये एक South America continent है. यहाँ पर कंट्री है ब्राजील. So in Brazil there is a city called as Rio. Rio de Janeiro. In short we call it as Rio. इसको Rio short में भी कहते हैं. यहाँ पर एक्चुअली समिट हुआ था. नाउ कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील? ठीक है, कैपिटल क्या है और उनके प्रेसिडेंट का नाम बताना है. व्हाई आई एम आस्किंग इट? बिकॉज G20 समिट विल बी होस्टेड इन 2024 बाय ब्राजील. नेक्स्ट ईयर जो G20 समिट होगा उसको G21 कह सकते हो, बिकॉज अफ्रीकन यूनियन भी ऐड हो जाएगा. नॉट
So next year the G20 summit is going to happen in Brazil. So Brazil becomes very important. ठीक है, so आपको ब्राजील की कैपिटल बताना है और प्रेसिडेंट का नाम बताना है. ठीक है, now please answer it in the comment section if you know it. Yes, 𝗟𝗲𝗴𝗹, very good. The right answer, ब्राजीलिया कैपिटल है BRASILIA, ब्राजीलिया, और प्रेसिडेंट का नाम है लूला डे सिल्वा, है ना. Yes. Sir, when will MHCT prep start? I can enroll for 2024. Yes, सुभाषनी जा, देखो MHCT का जो बैच है एक्चुअली CLAT 2024 का बैच है. ठीक है, तो वी हैव डिक्रीज द फीस ऑफ दैट. ठीक है, तो आप CLAT 2024 का जो कोर्स है उसी को आप ज्वाइन कर लेना. यू कैन ज्वाइन दैट, एंड वेयर विल बी डिस्कसिंग अबाउट ओलेट एग्जाम्स, अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम एज वेल. ठीक है, तो आप डाउनलोड द ऐप बायजूस एग्जाम प्रेप, गो टू CLAT सेक्शन और उसमें टॉक टू काउंसलर होगा. ठीक है, देयर यू कैन आस्क मोर अबाउट दैट. ठीक है, और YouTube पर जो इट विल स्टार्ट ऑन ऐप. ठीक है, आप ऐप डाउनलोड करो बायजूस एग्जाम प्रेप का, गो टू CLAT सेक्शन, वहां पे जाना, टॉक टू काउंसलर होगा. दे विल टेल यू इन डिटेल अबाउट द अपकमिंग बैचेस ऑफ MHCT, उसके बारे में वो डिटेल बता देंगे. ठीक है, ओके ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. अब देखो, वी वर टॉकिंग अबाउट द रियो समिट. सो इन 1992 द अर्थ समिट और रियो समिट हैपेंड इन 1992. इट रिजल्टेड इनटू व्हाट वी कॉल इट एज, इसके देखो, अब देखो इन्वायरमेंट समिट जो हुआ ना, दिस रिजल्टेड इनटू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ व्हाट वी कॉल इट एज UN conference on UN framework convention on climate change. Okay, so the earth summit we are talking about, which happened in 1992 in Rio, led to the establishment of UNFCCC, United Nation Framework Convention on Climate Change. यही, ठीक है. और आपको पता होना चाहिए, अंडर दिस एक्चुअली वी स्टार्टेड कंडक्टिंग COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको आज हम लोग COP 28 कह रहे हैं. द 28th मीटिंग, actually the 28th meeting happened in United Arab Emirates. So this COP 28 happens under the aegis of UNFCCC. That is what you should be knowing it. United Nations Framework Convention on Climate Change. ठीक है, to combat dangerous human interference with climate change and all. ठीक है, it was signed at a UN conference on environment development and all. ठीक है, so UNFCCC is a result of Earth Summit, which actually happened in Rio de Janeiro. ठीक है, okay. Now the next is, तो अगर आप देखोगे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एस्टैब्लिश इन 1992, एंड इसी के अंदर वी विल बी हैविंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. तो फर्स्ट देखो 1992 में जब एस्टैब्लिश हुआ ये, सो दे डिसाइडेड दैट दे विल कंडक्ट द फर्स्ट कॉप. ठीक है, सो UNFCCC वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1992. ठीक है, इट वाज अ रिजल्ट ऑफ रियो समिट of 1992. ठीक है, and they decided to actually conduct COP every year. So COP का full form क्या है? Conference of Parties. ठीक है, उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग COP कंडक्ट कराएंगे. ओके, Conference of Parties. ठीक है, ओके. So the first conference of parties happened in the year 1995. आपको बताना है कौन से प्लेस में हुआ था. पेरिस, फ्रांस, क्योटो, जापान, बर्लिन, जर्मनी, न्यू दिल्ली, इंडिया. प्लीज टेल मी द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. 𝗟𝗲𝗴𝗹, so we are actually making these classes from newspaper only. ठीक है, तो आप nothing to worry. So the important things we will do it by topic wise. ठीक है, कि जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में न्यूज में रहेगा, जैसे COP 28 न्यूज में है, सो वी आर कंडक्टिंग अ क्लास. सो वी विल कंडक्ट क्लासेस अकॉर्डिंगली. ठीक है, वो सारी न्यूज पेपर से ही रहेगा. ठीक है, so COP 1 happened in the year 1995, conference of parties under UNFCCC. आपको ये बताना है, you have to tell me that it happened in which city, which country. Paris, France, Kyoto, Japan, Berlin, Germany, New Delhi, India. Yes, Avani Singh, very good. The right answer is option C, Berlin, Germany is the right answer to this question. So first conference of parties happened in 1995, COP 1, Berlin, Germany. Okay. कुछ और आपको पता होना चाहिए जो फेमस वन है, जैसे COP 3 हैपेंड इन 1997 इन क्योटो इन जापान, एंड दिस रिजल्टेड इनटू व्हाट वी कॉल इट एज क्योटो प्रोटोकॉल. आपने नाम सुना होगा, यू मस्ट हैव रेड इट. तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, दैट COP 3 और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3 इज रिलेटेड विद, और क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विद विच कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. सो द आंसर इज COP 3. ठीक है, अभी रिसेंटली एलेट का एग्जाम हुआ था, तो इस तरह का क्वेश्चन आया था अभी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 28 जो दुबई में हुआ, दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इट इज रिलेटेड विद व्हाट.
सो द आंसर वाज इट इज रिलेटेड विद एनवायरमेंट समिट. ठीक है, इस तरह क्वेश्चन दे आर आस्किंग इट. ओके, सो यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. व्हेन डिड द कॉप हैपन इन न्यू दिल्ली इंडिया? एक बार कॉप जो है वो इंडिया में भी हुआ है, न्यू दिल्ली में. आपको बताना है कब हुआ था. 2001, 2002, 2015, 2007. व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? COP, which of the following conference of parties happen in New Delhi in India? सबको लाइक बटन प्रेस कर दो. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन गाइस. व्हाट इज द राइट आंसर? When did the COP happen in New Delhi in India? एक बार हुआ था. The right answer is 2002. So B is the right answer to this question. ठीक है. So COP 8 जो हुआ था, Conference of Parties 8 happened in New Delhi in 2002. ठीक है. We will be discussing further about it that yes, India has proposed again for a Conference of Parties meeting. So we will be discussing about this in the same class. Yes. Yes, Alisha Khan, जामिया के लिए भी classes हो गई. Yes. हाँ. Yes, Avani Singh, B is the right answer. ठीक है. देखो OLET के लिए अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट के लिए विल बी हैविंग अ पेड कोर्स. ठीक है, तो जो क्लैट 2024 का कोर्स है वी हैव एक्चुअली एक्सटेंडेड इट, है ना. सो इसी को आप ज्वाइन कर सकते हैं. आपको करना कुछ नहीं, जस्ट डाउनलोड आवर ऐप. ठीक है, गो टू क्लैट सेक्शन, उसमें नीचे जाना, टॉक टू काउंसलर लिखा होगा बटन, उस पर क्लिक करके पूछना कि आई वांट टू ज्वाइन द बैच फॉर जामिया एंट्रेंस और लेट्स से MHCT एंट्रेंस. सो दे विल सजेस्ट यू. ठीक है, तो वो आपको डिटेल बता देंगे कैसे ज्वाइन करना है. ठीक है, ओके. नाउ सो COP 8 which actually happened in the year 2002 happened in New Delhi. ठीक है, ओके. The next is एक और बहुत फेमस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, what we call it as Paris Climate Agreement. This corresponds to COP 21, COP 26, COP 24, COP 15. अब जितने भी एग्जाम्स होने वाले जैसे MHCT हो गया, है ना, जामिया हो गया, अभी आने वाले स्लैट हो गया, ये सब में इसको पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है COP 28 से. ठीक है, because they ask this question. This is a very famous one. Paris Climate Agreement corresponds to COP 21, COP 26, COP 24, COP 15. What is the right answer to this question? Because Paris Climate Agreement बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनफैक्ट दिस ईयर इन COP 28 द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की बात हुई थी, कुछ ना कुछ बात पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से रिलेटेड इवन इस साल भी बात हुई थी. ठीक है, सो इवन दिस ईयर व्हेन द COP 28 हैपेंड, the Paris Climate Agreement was discussed. So basically Paris Climate Agreement is COP 21. So A is the right answer, which actually happened in 2015. ठीक है, so A is the right answer, याद रखिएगा. Yes, very good 𝗟𝗲𝗴𝗹 पूनावाला. हाँ, so 2015 COP 21 happened in Paris, France. Okay. ठीक है, इसमें क्या हुआ था, व्हाट एक्चुअली वाज हैपेंड, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इसमें हुआ ये थे, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि यूएसए विड्रॉ कर लिया था, यूएसए हैड विथड्रू इट बट इट लेटर रीजॉइंड इन 2021. जो मेजर इमिटर जिसे नहीं ज्वाइन किया उसमें से एक ईरान है. ठीक है, सो यू शुड बी नोइंग अबाउट इट दैट इट इज वन ऑफ द मेजर इमिटर व्हिच हैज नॉट ज्वाइंड इट. नाउ ये मेन अग्री टारगेट है, आपको पता होना चाहिए. दीज आर द टू टारगेट्स that the pre-industrial level, the average rise in temperature should not cross by the end of this century, the 2100 year में AD में, it should not cross average 2 degree Celsius and it is better if it does not cross 1.5 degree Celsius. ठीक है, आपको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो टारगेट ये है कि 2100 AD खत्म होने तक 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा राइज नहीं करे, और बेहतर होगा कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा राइज नहीं करे. ओके, so the idea is the Paris Climate Agreement says that by the end of this century, that is 2100 AD, the average temperature of the earth should not cross 2 degrees Celsius. It is better if it does not cross more than 1.5 degrees Celsius. मतलब ये जैसे x डिग्री एवरेज टेम्परेचर होगा, so plus जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर इज हैपनिंग, so it should not cross, the increase in temperature should not cross 2 degrees Celsius, and it is preferable if it does not cross 1.5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, यही सब टारगेट है. और नेट जीरो इमिशन की बात की गई थी कि वी शुड ट्राई अवर बेस्ट टू इंश्योर नेट जीरो इमिशन एंड ऑल, सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट एज वेल. ठीक है, तो ये है पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट. दूसरी चीज एक और बहुत फेमस कॉप है, COP 26 which happened in Glasgow in UK. Now this was also very famous and we propose a lot of things here and that is why this is also important. देखो सबसे पहले आप बताओ, when do we celebrate Earth Day? 21 मई, 22 अप्रैल, 5 जून, 21 जून. अर्थ डे कब मनाते? एनीवन?
बिकॉज इस तरह के डेज एंड थीम से भी क्वेश्चन आया हुआ है अर्लियर, है ना। सो द राइट आंसर इज 22 अप्रैल, सो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग कोशिश करना। तो जो अर्थ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, इट वाज ओपन टू द सिग्नेचर ऑन 22 अप्रैल, ठीक है, 2016, 2015 में हुआ था, और नेक्स्ट ईयर ओपन टू सिग्नेचर हुआ था, ठीक है ना। सो एंड मेनी नेशंस हैव साइंड इट एंड ऑल, दैट्स हैव एन आइडिया। ठीक है, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाया जाता है। सम पीपल वर राइटिंग 5 जून, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग। ओके, सो जस्ट हैव एन आइडिया, यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। नाउ ये हो गया। अब देखो, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट COP26 ग्लासगो। देखो यहाँ पर है ग्लासगो, स्कॉटलैंड में एक जगह है। देखो, दिस इज इंडिया, दिस इज इंग्लैंड, है ना। तो ये स्कॉटलैंड है, यहाँ पर एक जगह है ग्लासगो। ओके, हियर एक्चुअली COP26 हैपेंड 2 years बैक। COP26 हुआ था 2022 में। ओके, हियर पीएम मोदी अनाउंस्ड पंचामृत। पंचामृत मतलब 5 एलिमेंट्स या 5 प्लेजेस, एक तरह से 5 कसम खाया गया था, मतलब एक तरह से 5 प्लेजेस वी हैड अनाउंस्ड। ओके, नाउ सो दीज प्लेजेस आर, इस प्लेस में 4 प्लेज जो है वो 2030 का टारगेट था। टारगेट वाज 2030 फॉर 4 केसेस, और एक में 2070 था। ठीक है, देखो, एज फार एज नेट जीरो इमिशन इज कंसर्न, आवर टारगेट इज 2070, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द रेस्ट 4 का जो टारगेट है 2030 का टारगेट है। ठीक है, so ये पढ़ लीजिएगा, we teach in detail in our paid classes and all these things, Panchamrit and all, so please go and read it, Panchamrit, the 5 pledges. Moreover, PM Modi also declared lifestyle for environment. अब ये क्या कॉन्सेप्ट होता है? To combat climate change was also shared. Lifestyle for environment means our life should be like that it should minimum impact the environment the least, या इस तरह हम लोग जिंदगी गुजारे कि एनवायरमेंट को लीस्ट इंपैक्ट दें। आवर लाइफ स्टाइल शुड बी सच दैट देयर शुड बी लीस्ट इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट, है ना। जिसको हम लोग नाउअडेज वी आर कॉलिंग इट एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट आल्सो, है ना। इसको एक और चीज कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो दैट इज व्हाट द आइडिया ऑफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट प्रपोज्ड इन COP26। ओके, सो दिस यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। ठीक है, Now the next is COP28 happened in Dubai, United Arab Emirates. ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए व्हाट्स दिस, बिकॉज दिस इज द करेक्ट वन। अच्छा, इससे पहले जो COP26 ग्लासगो में हुआ था, द नेक्स्ट लास्ट ईयर एक्चुअली इट हैपेंड इन COP27 शर्म अल शेख इजिप्ट। ठीक है, एंड दिस ईयर COP28 हैपेंड इन दुबई UAE। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, द करेंट वन हैपनिंग, और इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना। तो अब दिस इज द करेंट वन विच इज एक्चुअली अंडरगोइंग फ्रॉम 30th नवंबर टू 12 दिसंबर। ये 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक चल रहा है। सो आज टुडे विल बी द लास्ट डे फॉर दैट। ओके, सो लेट मी शो यू द वेन्यू। सो हियर इज इंडिया, दिस इज सऊदी अरब। ये ट्रायंगल कंट्री देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज UAE, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। ठीक है, इस UAE में एक शहर देखो, ये UAE है ना, दिस इज सिटी कॉल्ड एज दुबई। ओके, now can you please tell me what is the capital of UAE? UAE की कैपिटल क्या आपको बताना है? Anyone? I am waiting for the answers. ठीक है, so देखो ये 30th नवंबर से 12 दिसंबर के बीच it is happening, है ना, दुबई। Always remember, Dubai is not the capital. The capital of UAE is actually Abu Dhabi. ठीक है, okay, just have an idea. These are the things you should be knowing it. Now, so now क्या क्या discussion हुआ? So the most important thing again they discuss Paris Climate Agreement. मैंने अभी बताया आपको Paris Climate Agreement is very important. It's COP21 2015, है ना. Is all about implementing the agreement, ramping up ambition and all. So they are talking about this, है ना. Then the latest science of they talked about the most important thing, Paris Climate Agreement की बात हो गई, है ना. So इसी में बताया गया कि limit the global average temperature rise should be less than 1.5 degrees Celsius, है ना. These things we have discussed it and all. Yes, Abu Dhabi is the capital. Yes, 𝗟𝗲𝗴𝗹 yes. UAE की capital Abu Dhabi है. Yes, good. Now they discuss need to make progress in several work streams, hammering out details of loss and damage finance की बात की गई है. ठीक है, I hope you are aware. This was also discussed. First page पे आया था, मतलब first जगह हर जगह आया था न्यूज़पेपर पे. Loss and damage fund cleared on day 1 of COP28. तो पहले ही दिन ये loss and damage fund की बात कही गई. So what is loss and damage fund? We will discuss it. But before that, this is the person who is actually the president of UAE. Sorry, not president of UAE, president of COP28. ठीक है, so आपको बताना है
कि what is his name? So who is the president of COP28 which is happening right now? Your options are Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Sultan Ahmad Al Jaber, Sheikh Tamim ibn Hamad Al Thani. आपको ये बताना है कि COP28 जो अभी हो रहा है उसकी प्रेसिडेंट का नाम क्या है इन चारों में. So he is actually the person. You can see him in the photo. So please tell me. I'm waiting for the answers because these are the things which is in the news and they can ask it. President of COP28. What is the right answer? Anyone? Waiting for the answers. The right answer is option C. Yes, 𝗟𝗲𝗴𝗹 very good. Sultan Ahmad Al Jaber is the right answer to this question. So he is actually the head of COP28 and he is actually the head of ADNOC Abu Dhabi National Oil Company. Okay, because he is from UAE. He is a minister there. ठीक है, United Arab Emirates में है ना. He is the UAE's special envoy for climate change and all. ठीक है, so just have an idea about that. ठीक है. Special envoy and the president designate of COP28 climate talks. So this becomes very very important. This can be asked in the exam. ठीक है. Okay, just before moving on, अभी class खत्म नहीं हुई. There's a small announcement. We are providing this CLAT success kit on our app. So download our app. Go to CLAT section. कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर बाकी लॉ एंट्रेंस एग्जाम जिसको हम लोग ओलेट से डिफाइन करते हैं, अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम जैसे MHCT, SLAT, जामियास के लिए. सो डाउनलोड आवर ऐप, गो टू क्लैट सेक्शन, नीचे जाना, वहां पे लिखा होगा टॉक टू काउंसलर. सो कॉल देम एंड आस्क देम, दे विल टेल यू मोर अबाउट द अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम एंड ऑल. ओके, यस. एंड ये 2025 के लिए कोर्स है. दोज हु आर प्लानिंग नेक्स्ट ईयर, वी आर हैविंग दिस कोर्स. यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर इफ यू हैव एनी क्वेरी. 9538895678 पे कॉल कर सकते हो. ओके, अब हम लोग लेट्स टॉक अबाउट लॉस एंड डैमेज फंड बीइंग टॉक्ड अबाउट. ये आप देखो इसमें पढ़ते हैं in the same editorial, in the same the Hindu article, they are talking about that is meant to compensate countries already dealing with climate change. हाँ, अब देखो क्या है. The loss and damage fund was first announced in COP27 Sharm el Sheikh, Egypt. तो जब लास्ट ईयर COP27 हुआ था उसी में इसकी बात हुई थी. So लास्ट ईयर at Sharm el Sheikh, Sharm el Sheikh is a city in Egypt where COP27 the last year summit happened. ठीक है, सो पिछले साल जो समिट हुआ था वो COP27 शर्म एल शेख में हुआ था, वहीं इसकी बात कही गई थी. So it was actually talked about, the announced in loss and damage fund was announced last year and this year also the separate meetings have been happened and all to ensure that yes this should actually come out, है ना. तो ये आ जाए. तो इसमें क्या, अच्छा आपको समझना क्या पहले, first of all those countries which have made commitments, UAE have made commitment of $100 million, the Germany $100 million, US the $17 million, UK $50 million. So these are the countries which have actually made commitment that they will give this much amount of money in loss and damage fund. अभी होता क्या, loss and damage fund का क्या मतलब हुआ, we will discuss this also, कि what is the meaning of that. So the World Bank will be the interim host of the fund for a period of 4 years. तो इसका जो host होंगे वो World Bank होंगे. Now what do we mean by that? तो लॉस एंड डैमेज यानी किसका डैमेज हुआ है, किसका लॉस हुआ है, किसको कंपनसेशन देना. सो यस, क्लाइमेट चेंज हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ डैमेज टू विच कंट्रीज, स्पेशली दोज हु आर एक्चुअली द वीक कंट्रीज. उसको हम लोग सिड्स कहते हैं, स्मॉल आइलैंड एंड डेवलपिंग स्टेट्स. देन LDC, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड ऑल. तो जो गरीब कंट्री, पुअर कंट्रीज हैं, जो आइलैंड कंट्रीज हैं, उनको क्लाइमेट चेंज का बहुत इंपैक्ट हुआ है उन पर. ओके, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. फॉर एग्जांपल इफ यू आर लिविंग इन इंडिया, तो शायद इंडिया में भी हुआ होगा असर तो क्लाइमेट चेंज का असर. सो एवरीवन हैज गॉट द इंपैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द आइलैंड नेशन, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मालदीव्स हुआ, यहाँ पे यू विल फाइंड इट मॉरिशस, ठीक है, यहाँ पे फिजी आइलैंड, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स है ना. सो दीज आइलैंड सिड्स कहते हैं, स्मॉल आइलैंड एंड डेवलपिंग स्टेट्स. सो दीज आइलैंड नेशंस are the worst sufferer as far as climate change is concerned. तो ये जो आइलैंड नेशन से ये सबसे ज्यादा उनको इम्पैक्ट हुआ है इसका क्लाइमेट चेंज का. व्हाई? द रीजन इज वेरी सिंपल. जैसे अब ग्लोबल वार्मिंग होता है, सो लेट्स से व्हेन अ ग्लोबल वार्मिंग हैपेंस, सो व्हेन अ ग्लोबल वार्मिंग हैपेंस, क्लाइमेट चेंज ही का पार्ट है ना. व्हाट विल हैपन? बर्फ पिघलेगी. यस, जब गर्मी होगा तो बर्फ पिघलेगी, सो द आइस विल मेल्ट. सो आइस, और यू कैन से ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग. चलो भाई ग्लेशियर मेल्ट कर गया, अब उससे क्या होगा? सो व्हेन द ग्लेशियर इज मेल्टिंग, व्हाट विल हैपन इज राइज इन सी लेवल हो जाएगा. समुद्री लेवल ऊपर होगा ना, इसलिए कि पानी जल्दी जल्दी पिघल रहा है ग्लेशियर. सो व्हेन द ग्लेशियर इज मेल्टिंग फास्ट, वी विल सी द राइज इन सी लेवल. Whenever we will see the rise in sea level, it will impact the island nation first.
जो आइलैंड नेशन होगा वो डूबने लगेगा, या जो समुद्री तट पर जो शहर होगा, द सिटीज विच आर एक्चुअली इन द कोस्टल एरियाज विल गेट सबमर्ज्ड. सो दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड डू समथिंग फॉर देम. ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है वल्नरेबल, इन्वायरमेंटली वल्नरेबल कंट्रीज, यानी वो कंट्रीज, SIDS वो कंट्रीज हैं जो कि इन्वायरमेंट में थोड़ा सा भी चेंजेस आएगा तो इन लोग पर ज्यादा असर पड़ेगा. सो एक्चुअली फॉर देम लॉस एंड डैमेज फंड हैज बीन क्रिएटेड दैट दोज हु आर डेवलपिंग नेशन, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, एंड दे शुड बी गिवन सम कंपनसेशन, उन लोगों को पैसा दिया जाना चाहिए ताकि वो फाइट कर सकें क्लाइमेट चेंज को एंड ऑल. सो दैट इज व्हाट द आइडिया इज. इज इट क्लियर? यू गॉट इट? Now let's discuss some more thing which actually was talked about in COP28. For example, Bihar receives global acclaim at COP28 for afforestation initiative. ठीक है, so जैसे बिहार का एक afforestation initiative है, activities in the state of Bihar to combat climate change, इसके लिए बिहार को global acclaim मिला, यानी तारीफ की गई. So it was actually praised at the COP28, the Bihar's initiative of afforestation. Afforestation था पेड़ लगाना हिंदी में, है ना, कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का एक इनिशिएटिव था जिसकी वजह से काफी तारीफ हुई COP28 में. नाउ यस, यू कैन रीड अबाउट इट, है ना. सो ड्यूरिंग ए डेडिकेटेड सेशन बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस एट इंडियन पवेलियन एंड ऑल. ओके, एंड एट COP28 इन दुबई, बिहार सॉइल कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हॉग लाइमलाइट. तो जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, यानी बहुत सारे ऐसे सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिस है जिससे मिट्टी खराब नहीं हो या मिट्टी की क्वालिटी गिरे नहीं, है ना. सो देयर आर लॉट ऑफ प्रैक्टिसेस व्हिच इंश्योर that the fertility of the soil should not decrease or the quality of the soil should not decrease. Okay, so these are the initiatives of the Bihar government which was praised at the COP28. ठीक है, so उसकी तारीफ की गई and all, and that is what it was in the news. ठीक है, okay, the next is refraining from fresh commitments to contain global temperature rise. PM Modi in his address at COP28 offered to host 33rd edition of annual summit due in X in India. अब आपको बताना X. Now why I'm giving a passage based question? If you read the question in CLAT and all, they are giving a passage based question. In fact, nowadays they are giving question in the passage and you have to answer it just finding out the from passage. ठीक है, तो passage based question दे रहे हैं तो हम लोग चाहते हैं कि आपकी आदत बना दे कि आप passage पढ़ने की आदत हो. ठीक है, so read the passage carefully and answer it. Okay. He said that the developed countries ought to be vacating the carbon space before 2050 and made a pitch for world's country to join India on Green Credit Initiative, which was a non-commercial effort to create a carbon sink. What is X in the passage? 2025, 2028, 2032, 2036. Everyone should answer it. So India has offered to host the 33rd edition, है ना, of annual summit in X. Yes, Avari Singh, very good. The right answer is PM Modi pitches for COP28 edition of COP in India. The answer is option B. अब मैं आंसर बताऊं, इस पैसेज के अंदर आंसर मेंशन था. In this passage, the answer was already mentioned. Where the answer was mentioned? Can anyone tell me? यही आपको समझना एग्जाम में कि not only knowledge, but your common sense plays an important role in the exam. यही मैं बताना चाह रहा हूं कि सिर्फ नॉलेज से नहीं होता है, कॉमन सेंस से भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे COP28 is actually happening. So this is the 28th meeting और ये कब हो रहा है? 2023 में. ठीक है, now they are talking about 33rd edition, यानी COP33 की बात हो रही है. This will be hosted in India by what? तो 2023 COP28 happen in 2023. So COP33 will be happening 5 years add कर दो इसमें. So this becomes 2028. So the right answer is B. आप समझ गए? जब COP 28 2023 में इस साल हो रहा है तो COP 33 कब होगा? 33rd edition, यानी COP 33 कब होगा? So 5 years later. So just add it, है ना? So PM Modi pitches for 2028 edition of COP in India. एक बार पहले already हो चुका है 2002 में. I have told you in Delhi. We have already discussed this in the class, है ना? So refraining from fresh commitments to contain global rise temperature, PM Modi in his address at COP28 offered to host the 33rd edition of annual summit due in 2028. ठीक है? So ये पूछा जा सकता है. Of course, these are the things you should be knowing it. That India has decided to hold the annual COP summit when? So it is the COP 33 and that will be in 2028. Okay. Now 10 things to watch out for Dubai summit. ये वाली article आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है? So this is the Hindu article COP28 10 things to watch out for at Dubai summit. Just read it. ठीक है? इसमें बहुत important चीजें mentioned है. So I'm leaving it for you. ठीक है?
एक दो चीजें और पता होना चाहिए, फ्यू थिंग्स यू शुड बी नोइंग इट. इंडिया रिफ्यूजेस टू साइन COP28 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ. तो क्लाइमेट और हेल्थ पर एक डिक्लेरेशन हुआ था जो इंडिया ने साइन नहीं किया, इनकार कर दिया साइन करने से. India decided not to sign this climate and health declaration in the COP28. Why? And India will not be bound by curbs on energy use, says Environment Secretary. Why? क्यों? Because में एक pledge लिया गया था to triple the installed renewable energy capacity by 2030. ठीक है, इसमें बहुत सारी बात की गई थी, है ना, that will not be bound by restrictions on the energy use it could not use and all. ठीक है, तो अब देखो बताते हैं क्या है. See, the idea is कि कोल का यूज जो है ना, कोल इज नॉन रिन्यूएबल, वी हैव टू स्विच इट टू रिन्यूएबल एनर्जीज. तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या क्या हो सकता है? सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? तो जैसे आपने सुना होगा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, एटसेट्रा एंड ऑल. तो ये बात तो अच्छी है, इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट वी नीड टू ट्रांजिशन. ठीक है, लेकिन हम कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते. वी कैन नॉट डू एनी कमिटमेंट कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की एनर्जी जो है ट्रिपल कर देंगे और कोल को हम छोड़ देंगे. Because still if we see almost 75%, like fossil fuels mainly coal provides 75% of India's power supply. तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम 2030 तक सारा कोल बंद कर दें, because then from where it is not possible that so fast we will be moving towards renewable energy. ठीक है, इतना जल्दी हम लोग renewable energy में स्विच हो जाएं और कोल को सारा का फेज आउट कर दें, ये पॉसिबल नहीं, इट विल टेक सम टाइम. ठीक है, सो इट्स नॉट, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. अभी भी बहुत बड़ी एनर्जी जो है इंडिया में वो कोल से ही जनरेट होती है, थर्मल पावर प्लांट वी कॉल इट एज, राइट. सो स्टिल वी जनरेट अ लॉट ऑफ कोल, a lot of energy from thermal power plant which comes from fossil fuels like coal and all. ठीक है, so we cannot give any pledge and all. तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि नहीं, हम लोग प्लेज को नहीं, ये नहीं कर सकते हैं all, because when we give a pledge we have to accept it, we have to do that. सिर्फ जबान से बोलना नहीं है, उसको करके भी दिखाना है ना. So that is why it is, है ना. India has also not signed declaration on climate and health and all, है ना. That is what it was in the news. Okay, yes. Now just to shun coal power runs contrary to India's long-standing position that it needs to rely on larger source of energy and all. तो बात ये कि हाँ, अभी हम लोग चूंकि largest source of energy अभी भी इंडिया में कोल है, so the largest source of energy for India is coal still. So we cannot within a very short span of time leave the entire coal and start depending on renewable energy. इतना कम टाइम में इतना जल्दी हम लोग पूरी तरह कोल को छोड़ नहीं सकते. It's not possible and all. Although in the long run, of course, we should switch towards renewable energy. Yes. Now, on the sidelines of Paris Climate Agreement, which of the following was established? Loss and Damage Fund, International Solar Alliance, International Atomic Energy, none of the above. What is the right answer? सबको like button press कर दो, guys. Please press the like button, everyone. जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था COP21 2015 में, उसके साइडलाइन में एक चीज बनाई गई थी, उसका नाम आपको बताना है. What is the right answer? Anyone? Yes, 𝗟𝗲𝗴𝗹, very good. International Solar Alliance, B is the right answer to this question. And where is the headquarter of International Solar Alliance? ये ALET का question है. ALET 2021 में I think this question was asked. Headquarter of International Solar Alliance, Paris, France, Gurugram, Haryana, Istanbul, Turkey, New York, USA. Yes, very good. 𝗟𝗲𝗴𝗹, you are right. The right answer is Gurugram, Haryana. Headquarter of International Solar Alliance is in Gurugram, Haryana. आप देख सकते हो पेरिस फ्रांस में फाउंडेड हुआ था 2015 में on the sideline of COP21, है ना. And the headquarter is in Gurugram, Haryana. Now, can you please tell me who is the Director General of International Solar Alliance? Your options are Mr. 𝗟𝗄𝗡𝗎, Mr. Ajay Mathur, Mr. Narendra Modi, Mr. Amitabh Kant. Director General of International Solar Alliance कौन है, आपको बताना है. What is the right answer? Yes, अजय माथुर. Very good. 𝗟𝗲𝗴𝗹, good. हाँ, yes, Avani Singh, गुरुग्राम हेडक्वार्टर है, आप देख सकते हो. It's headquarter in Gurugram and Director General is Mr. Ajay Mathur. So these are the basic things you should be knowing about it. Now there's a homework task. Task ये है, write in the comment section, find out who is the MOEFCC of India. Ministry of Environment, Forest and Climate Change के मिनिस्टर का नाम बताना है. So or you can call it in short Minister of Environment. Actually पूरा लिखते हैं Minister of Environment, Forest and Climate Change. So who is the Environment Minister of India? Write it in the comment section नीचे. ठीक है? So this is all about today's class. Subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram and download the BYJU'S exam prep app.
Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.